for leave to introduce the bill reconstitute the Medical and Dental Council in Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022. मोहतरमा इस बिल के बारे में बताएं जी। बहुत शुक्रिया सर। सर, पाकिस्तान का सबसे अहम अदारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, सर ये 1962 के ऑर्डिनेंस के तहत सर ये चल रहा था। फिर उसके बाद 2012 में सर इसमें अमेंडमेंट्स आई। सर इस लॉ के तहत पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट्स को रेगुलराइज किया जाता है। लेकिन सर जिस तरह से पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान के अदारों को तबाह किया, उनमें जो ब्लैक लॉज थे उनमें एक PMDC का ब्लैक लॉ था जो PMC में कन्वर्ट किया गया, और सेकंड जो ब्लैक लॉ था वो था MTI लॉ, जिसमें गरीबों से मुफ्त इलाज का हक छीन लिया गया। सर लेकिन पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल को जिस तरह से PMC के थ्रू सबोताज किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में काले हुरूफों से लिखा जाएगा। सर इस मौके पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल साहब का, जिनके साथ मैंने बैठ के डिस्कस किया। उनकी कंसेंट से हमने इस बिल को तश्कील दिया और आज ये हमने असेंबली में सर लेकर आए हैं। सर PMC के लॉ के तहत एक तो सर रेगुलराइजेशन नहीं थी। सर इस PMDC के इंस्टीट्यूशंस को सर 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। एक तो सर हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले कर दिया गया, दूसरा CPSP के थ्रू हवाले कर दिया गया, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी इनको रेगुलराइज करने के लिए। सर Mdcat जो एग्ज़ाम होता है, एंट्री टेस्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट बनने का ख्वाब देख रहे थे और मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का ख्वाब रखे थे, उनमें जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का वहाँ पे तरीक़ेकार एंट्री टेस्ट का लिया गया, उससे हमारे लाखों बच्चे मायूस हुए और उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो करप्शन हुई। सो उसके बाद उन्होंने NLE का एक एग्ज़ाम शुरू किया। सर NLE के एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ी तादाद में आपने देखा कि बच्चे डिस्करेज हुए मेडिकल एजुकेशन से, सर उनको मुस्तफ़ीद नहीं हुए और करप्शन का बाज़ार सर गर्म किया गया। सर उसके अलावा ये कहीं से भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। सर हमने ये अभी फिर जब ये हुकूमत खुशकिस्मती से जब चली गई तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि जो ब्लैक लॉज हैं उनको हम रिवर्ट करेंगे। तो सर ये ब्लैक लॉ हम रिवर्ट करें ताकि हमारा ये अदारा रेगुलराइज हो, मेडिकल एजुकेशन प्रमोट हो। सर हमारे मुल्क में 50% से ज़्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के डॉक्टर दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, वहाँ पे जाके सर्विसेज देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन इस PMC लॉ के आने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल निशान था। तो सर हमने उसको भी इस लॉ में जो है वो ख़त्म किया है। जो 1962 का लॉ था उसको हम फॉलो करने जा रहे हैं। सर आपने देखा कि पाकिस्तानी डॉक्टरों ने जिस तरह से कोविड में अपना बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया, अपनी ज़िंदगियों से खेले और उन्होंने हमें सर्विसेज दी। लेकिन PMC के लॉ आने के बाद मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के जो प्राइवेट थे वो डिस्करेज हुए, स्टूडेंट डिस्करेज हुए, उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा था और एक माफिया थी जो कि इस लॉ के थ्रू कमा रही थी। तो सर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी। मिनिस्टर फॉर हेल्थ, डू यू अपोज इट? मिनिस्टर साहब का माइक। नो सर, आई डोंट अपोज। I adopt. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to reconstitute the Medical and Dental Council of Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 16. Mohtarama introduce करें मेहरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। बहुत शुक्रिया सर। I rise to introduce the bill reconstitute the Medical and Dental Council in Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022. The bill in question stands introduced. Item number 17. Dr. Mehreen Razak Bhutto Sayyid Rafiullah Agha to move item number 17. मोहतरमा मेहरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा का माइक खोलें।
बहुत शुक्रिया सर. I rise to move under the rule 288 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with to take into consideration the bill to reconstitute the Medical and Dental Council in Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022. Now I put the motion to the House. It has been moved out under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule to be dispensed with to take into consideration the bill to reconstitute the Medical and Dental Council of Pakistan, the Pakistan Medical Dental Council Bill 2022. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 18, Dr. Mehreen Razak Bhutto, Syed Rafiullah Agha to move item number. Sir, I wish to move that the bill to reconstitute the Medical and Dental Council in Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Minister for Health, do you oppose it? Sir, no, I don't oppose it, sir. I adopt it. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to reconstitute the Medical and Dental Council of the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The question is that from clause 2 to clause 49 do stand part of the bill. The question is that clauses from 2 to 52 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently all the clauses stand part of the bill. The question is from Schedule 1 to Schedule 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently all schedules stand part of the bill. Clause 1, Preamble and Short Title. The question is that the Clause 1 and Preamble and Short Title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So Clause 1 and Preamble and Short Title do stand part of the bill. Item number 19, Mehreen Razak Bhutto to move item number 19. Sir, I wish to move that the bill reconstitute the Medical and Dental Council in Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to reconstitute the Medical and Dental Council of Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the bill is passed.